Assalamu alaikum everyone. Thank you for joining us. I'm Sara Nisar. I'm a designer and an educator. Today we're going to talk about art and our process, our journey and how it has helped us heal. I wouldn't say it's something that's complete as yet, but it's just a process. With me, I have Abdal Mufti. Abdal, if you can introduce yourself. Assalamualaikum, Sara, and assalamualaikum everyone, whoever is watching. My name is Abdal Mufti. I wouldn't call myself an artist. I'm a self-taught something. I illustrate and I draw. And I recently started doing this new style of illustrations, which is more dynamic. There's an element of music in it, and very brief animations. Something that has helped people connect. But I've been painting for past 8 years now. I started off with oil paints, and my day job, which is also on this poster for this talk, is that I'm head of research in education department. So Abdal and I basically wanted to have a conversation together because we thought that the kind of work that we did, in the sense Abdal's work as a self-taught something, I would say it's still an artist, and me being an educator. I teach at Karachi University at the Visual Studies department. So I teach design and multiple courses within design to second year and fourth year students. So I thought it would be interesting to kind of talk about the process of creating versus the process of seeing art and how it impacts a person. Abdal, do you want to kind of talk about how it has been for you during this lockdown? Kis tarike se cheezein hui hain, your work and the response you've received? So I think it's. I would actually start like before the lockdown. So I think fortunately or unfortunately, आर्ट मैंने कभी किसी से सीखा नहीं, तो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. इट केम टू मी लाइक बहुत नेचुरली. एक दिन ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी पर्टिकुलरली प्लेजेंट फेज इन माय लाइफ, मुझे एक पेंट ब्रश मिला अपने स्टूडियो में ऊपर स्टोर रूम में. मैंने उसको यूज़ करके मेड अ पेंटिंग, और वो जो एक्सपीरियंस था वो आई थिंक उससे पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था. तो उसके बाद बस kept doing it, मैं करता रहा और काफ़ी ज़्यादा, मतलब शुरू में बहुत पैशन से करता रहा. Then it evolved. मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी कि आर्ट से आप, मतलब if you are honest, अगर आप सच्चाई से बात करते हैं आर्ट के थ्रू, तो लोग कनेक्ट करते हैं. और ये बहुत, मतलब मैं रिसेंटली नहीं कहूँगा, ये समथिंग जो मैं हमेशा से करता आया हूँ. बट रिसेंटली ये है कि वो एक पब्लिक डोमेन में आ गया, लोगों ने उसके साथ देखना शुरू किया. लोगों को उससे कोई, आप समझ लें, मतलब मिलता है होपफुली. जो कुछ लोग जिनसे बात होती है वो ये कहते हैं. सो आई थिंक वो एक हमेशा से एक वो चीज़ थी आर्ट के अंदर, कुछ सच्चाई थी. बिकॉज मुझे इसके अलावा कोई चीज़ समझ नहीं है आर्ट में, क्योंकि मैं बनाता ही अपने लिए था. तो अपने लिए जब आप बनाते हैं तो आप सच्चाई से बनाते हैं. आपको ये आपको उसके अंदर और कोई मीडियम, कुछ रीज़न समझ नहीं आती. दूसरा, पैसे भी कभी कमाना कोई पर्पज़ नहीं था, क्योंकि डे जॉब थी. तो ये हमेशा से एक चीज़ साथ साथ चलती आई है. तो आई थिंक इसी सेंस में कि आर्ट, अब इसी को अगर आप चीज़ को ले आए कोविड सिचुएशन के दौरान, तो कोविड में एक तो ये कि सिचुएशन हम सबको पता है कि वेयर इन अ वेरी पेक्युलर सिचुएशन, सब कुछ बंद हो गया. और एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आज से पहले शायद दुनिया में हमारी जनरेशन ने शायद कभी ना देखी हो. तो उसमें आप डिस्कनेक्ट भी हो गए लोग एक दूसरे से. तो उसमें आई थिंक वो उसका एक, मैं कहता हूँ कि उसका इफेक्ट शायद मल्टीप्लाई हो गया. उसी चीज़ का जो मैं हमेशा से करता आ रहा था, उसका इफेक्ट मल्टीप्लाई हो गया, इफ एनीथिंग, कि वो लोगों को, क्योंकि आप वैसे भी ह्यूमन इंटरेक्शन आपकी मिनिमाइज होगी, तो एनीथिंग जो सच्चाई आपको जिसमें नज़र आती थी, या वो ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता था कोई बंदा सच्ची बात कर रहा है, वो आप ज़्यादा कनेक्ट करना शुरू हो गए उसके साथ. तो आई थिंक इट्स पार्टली अ कोविड इफेक्ट. एंड मेरे लिए भी, बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम फेज, तो मेरे लिए भी वो आर्ट की वैल्यू ज़्यादा हो गई. बिकॉज और किसी आप बात नहीं कर सकते, तो फिर आप घर आके आप पेंट करते हैं, और फिर पेंट से ही, कैनवस से ही वो बातें करते हैं. जब आप शायद किसी दोस्त तो शायद नहीं है, तो किसी से भी बात करते हैं, तो आप वो कैनवस से बात करते हैं. तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ, नहीं, आई एग्री, बिकॉज आई थिंक एज अ टीचर मेरे लिए ये एक तरीके से सबसे बड़ा लेसन रहा है. और स्पेसिफिकली आई थिंक कोविड में तो ज़्यादा इस चीज़ का वो हुआ है, बिकॉज इनिशियली जब लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इसी बात पे था कि अब नॉर्मल हम कैसे चीज़ें रखें.
जो आपको एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन भी बता रही थी, आपके जो टीचर्स वगैरह हैं वो उसी पे था कि बच्चों के लिए, आपके स्टूडेंट्स के लिए चीज़ बदलनी नहीं चाहिए, वही असाइनमेंट्स करने होंगे, वही जो भी एक्टिविटीज़ उनकी प्लान थी उसी तरीके से चलना होगा। बिकॉज एक जो मेन चीज़ वो भी थी कि सैलरी आप इसी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, या बच्चों की पढ़ाई में वो ना हो, मसला ना हो, तो यू हैव टू काइंड ऑफ कंटिन्यू द वे यू हैव बिन इन अ प्री कोविड स्टेट। बट आई थिंक वो एक तरीके से डिल्यूजनल थॉट प्रोसेस भी था कि हम उसी को उस नॉर्मल को ही आगे लेकर चलें, और हम एंड स्पेशली जब हम आर्ट की बात करते हैं, क्योंकि इतना एक इमोशनल प्रोसेस होता है, आप खुद उसमें इतने इन्वेस्ट हो जाते हैं, आप पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो, एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो आप डिसरिगार्ड करें कि जो चीज़ें हो रही हैं या आपके इर्द गिर्द जिस तरीके से लोगों के जो लोग जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, उसको आई थिंक इनटू अकाउंट लेना बहुत ज़रूरी था। तो आई थिंक what you went through, it was similar to, I would say, what my students went through, in kind of experiencing and understanding what they were experiencing through their art. और I think मेरे लिए जो process वो इस तरीके से वो थोड़ा सा, I wouldn't say exactly therapeutic, but I think एक enriching process इस वजह से भी बन गया था, because through them I was able to kind of understand मैं क्या वो कर रही थी, like मैं क्या फील कर रही थी, एंड हमारे साथ एक साथ क्या चीज़ हो रही थी। बिकॉज अक्सर काफ़ी दफ़ा ये भी होता है कि आप एक आइसोलेशन में चीज़ देख रहे होते हैं, या आप एक आइसोलेशन में चीज़ कर रहे होते हैं, और अभी तो और भी ज़्यादा उसमें वो हो गया था कि आप एक फिजिकल आइसोलेशन में भी थे। इट वॉजंट इवन कि आप शेयर्ड स्पेस में थे, आप एक साथ क्लास वगैरह ले रहे थे या काम कर रहे थे, आप सब कुछ अकेले कर रहे थे। तो उसमें जब आपने शेयर करना शुरू किया कि आपका थॉट प्रोसेस क्या था, या आपके इमोशंस क्या थे, एक्सपीरियंसेस क्या थे, उसमें आई थिंक एक तरीके से वो कनेक्टिविटी बनी, एक बॉन्ड बन पाया स्टूडेंट्स के बीच में भी, और अल्टीमेटली मेरा उनके साथ और उनका मेरे साथ, जिसमें हम दोनों एक दूसरे की रियलिटी समझ पा रहे थे कि जैसे ऑनलाइन ही अगर आप चीज़ें देख लें कि जिस तरीके से हुई थी कि हमें ठीक है असाइनमेंट भी करना है, बट एट द सेम टाइम इंटरनेट इश्यूज भी थे, एट द सेम टाइम घर का काम भी करना था। तो आई थिंक जो स्पेसेस एक तरीके से हम डिवाइड करते हैं कि स्कूल जिस तरीके से है, या आपका घर घर है और स्कूल स्कूल है, वो उसको उस बाउंड्रीज को मेंटेन करने में काफ़ी मसला था। और आई थिंक क्योंकि ये एक उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी एक्सप्रेस करने के लिए, तो आई थिंक इन दैट सेंस इन अ लॉट ऑफ वेज क्रिएटिविटी सेव्ड अ लॉट ऑफ अस एज वेल, because we were able to really freely express what we were going through. I think that's very interesting what you said. You think by practicing art during this time, how, मतलब as a teacher, आप पहले भी स्टूडेंट पढ़ाती रही होंगी, आप अभी भी पढ़ा रही हैं. How do you think it was different? Like, what was different in what was created by the students? Because मैं अगर सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे आर्ट फॉर्म में शायद इतनी डिफरेंस नहीं आया, मतलब इन द सेंस के उसकी रिफ्लेक्शन में इतना डिफरेंस नहीं आया. पर हाँ, उसकी द मीनिंग, द वे मैं जिसको इंटरप्रेट करता था, जिससे कनेक्ट करता था, उसमें शायद डिफरेंस आया. So it's very interesting. How did it change for your students? Was it like a different form of art? In a way, I think हम जब पहले वो करते थे, it used to be I used to give an assignment और सब students अपना वो कर लेते थे, right? And the assignments used to be more external facing, in the sense के because communication design में हम usually service design की भी बात करते हैं कि how can we create brand identities for people, or how can we communicate externally with people कि आपका art कहना क्या चाह रहा है basically. तो जब हम उसकी बात करते थे तो हम अक्सर इस तरीके के असाइनमेंट्स करते थे कि आप एक पोस्टर बना दें, या फर्ज करें कि जैसे अगर हम कोविड को ही देखें कि कोविड के इम्पैक्ट्स क्या हैं, या आप लोगों को बताएं कि उसके मास्क पहनने के फ़ायदे कौन से हैं. सो लाइक इट वाज मोर ऑफ एन अवेयरनेस रेजिंग थिंग, जिस तरीके से वो पहले करते आ रहे थे. आई थिंक अब इसमें ये चीज़ इस वजह से भी चेंज हुई बिकॉज हम एक्सटर्नल फेसिंग जब हमने करना शुरू किया था, सो आई रियलाइज दैट इवन तो वो चीज़ हो रही थी, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो एक इनवर्ड लेंस था कि एक्सटर्नली इन पर्सन जब हम करते थे तो वो फिर भी शायद बेहतर होता था, बिकॉज एक आप कॉन्वर्जेशन कर सकते थे, एक डिस्कशन आप कर सकते थे, एंड देन इट लेड टू सर्टेन आउटपुट कि अच्छा कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकती है. बट आई थिंक इस दफ़ा हम एक तरीके से वी वर लाइक माई सेंस वॉज कि हम फोर्स कर रहे हैं कि आप इसके बारे में बात करें, आप कोविड के बारे में बात करें, आप फर्ज करें फेक न्यूज़ के बारे में आप कोई ना कोई कॉमेंट दें,
It was like कि आप उनसे वो कोई चीज़ करवा रहे हैं जब उनको पता ही नहीं है कि वो खुद किस फेज में है, या हम उस चीज़ को, हम किस चीज़ को समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं. लाइक यू सेड कि ये ऐसी चीज़ थी जो पहले कभी नहीं हुई. तो आई थिंक काम का जो एक इनपुट जो मेरी तरफ से गया वो डिफरेंट हो गया. बिकॉज देन आई आस्क्ड देम कि आप भूल जाएं कि आप लोगों से क्या बात करना चाह रहे हैं और आप खुद से बात करना शुरू करें कि आप क्या फील कर रहे हैं और आप इस मोमेंट में क्या चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं. आई थिंक जब एक बार उन्होंने वो चीज़ की, एज अ व्यूअर मेरे लिए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था. बिकॉज आई थिंक जो वोकेबलरी मेरे पास नहीं थी कि मैं जो फील कर रही थी या जो चीज़ें या जो बातें हो रही थी उसको एक तरीके से इमोशनली उन इमोशंस को डिस्क्राइब करना जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, वो स्टूडेंट्स के काम के थ्रू हम एक तरीके से कर पाए. तो वो कलेक्टिवली हम उस चीज़ को वो फील कर सकते थे कि अच्छा, इफ समवन वाज फीलिंग जॉयफुल, तो जब उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्रेस किया तो वो बाकी सब उस चीज़ से रिलेट कर पा रहे थे. और जो कॉमनली जो चीज़ें सबसे ज़्यादा आई वो यही था कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा वो थी, एंजाइटी बहुत ज़्यादा थी. तो यू कुड ऑल्सो सी कि मेरे जो 20-24 स्टूडेंट्स थे उसमें एक तरीके से जो पैटर्न्स भी बन रहे थे कि व्हाट वर द इमोशंस जो व्हिच वर बीइंग फेल्ट द मोस्ट एंड हाउ there were ups and downs. It wasn't all down, it wasn't also all up. So I think that was an interesting process in understanding कि art देखकर, मेरे लिए especially, कि art देखकर हम किस तरीके से चीज़ों का सेंस एक तरीके से बना सकते हैं. No, I think that's very interesting to see how there's similarities in how people Yeah. feel and how they sort of that comes out through art. So I think that's very interesting. So in your work, like I'm curious कि जब लोगों से interaction होती है, like when people kind of comment about how they can relate to your work, does it impact what you create? Or is it always you? Like, does it always come from what you want to do, or does it get changed from what बहुत लोग people मुझे say? कहते हैं कि हमारा पोर्ट्रेट बना दे, तो वो तो obviously. that That's the never first job as an artist. and that never influences me. People Yeah. at times send me a song. Unfortunately, that influences me as well. देखें, so जब मैंने शुरू किया था तो it was very about me. जब मैंने आर्ट शुरू में, अगर आप आज से मैं 6-7 साल पुराना आर्ट देखूं तो वो सारा मेरे बारे में है, बहुत सेल्फिश है, एट टाइम्स बहुत डार्क है, ज़्यादातर डार्क है. बिकॉज आर्ट शुरू मेजॉरिटी लोग इसी वजह से करते हैं कि वो एक स्केप होता है, स्पेशली वो लोग जो अपने सेल्फ खुद से करना शुरू करते हैं, उनके लिए एक बिल्कुल. स्केप. और मेरे लिए तो था ही एक स्केप. इट वाज लाइक अ वे आउट. आई वाज मैजिक ऑल ऑफ दैट. फिर आहिस्ता आहिस्ता when I became socially aware, because मैं luckily unluckily मैं डेवलपमेंट सेक्टर में थोड़ा सा काम किया, मैं पढ़ाना शुरू किया बच्चों को. टीच फॉर पाकिस्तान एक प्रोग्राम था, उसमें कम्युनिटीज़ देखी, लोगों के मसले देखे. मैं रियलाइज के मेरे से बड़े इश्यूज हैं लोगों के, बहुत बड़े हैं. मतलब मेरा इश्यूज शायद स्टैंड नोवेयर नियर व्हाट दीज इश्यूज आर. सो माय वर्क इवॉल्व्ड इन दैट वे. तो वो सोशली अवेयर होना शुरू हो गया. मैंने बहुत सी ज़्यादा बातें, मतलब एक टाइम ये था कि मैं बहुत ज़्यादा चाइल्ड सेंटर्ड आर्ट बनाना शुरू किया अननोइंगली. मतलब मुझे खुद भी रियलाइज नहीं होता था. और बड़े मेरे उस टाइम पे दोस्त थे जो जिनको आर्ट उतना समझ आया, तो बड़ा मजाक भी उड़ाते थे कि यार तुम ये ड्राइंगें बनाते रहते हो, ये वो. और वो एक वो बड़ा, बट वो इट वाज वेरी ट्रू, मतलब वेरी बहुत ऑर्गेनिक स्विच था. इवन मुझे रियलाइज भी नहीं होता था कि मैं उस मोड में चला गया. मतलब वो एक बहुत सी फैंटेसी वर्ल्ड, कलरफुल चाइल्डिश वर्ल्ड्स बनाने शुरू हो गया था. मैं यूज्ड टू ड्रॉ विद माय स्टूडेंट्स, थर्ड फोर्थ ग्रेडर्स, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस था. एंड देन आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स सोशली अवेयर की तरफ. अब मुझे लगता है मैं इस स्टेज में जब मैं स्टोरीज बताता हूँ, मतलब आई टेल स्टोरीज जो मेरे इर्द गिर्द हैं और जो मेरे बारे में भी हैं, लेकिन वो कम है मेरे बारे में. अब ज़्यादातर यही जो मेरे इर्द गिर्द है. सो इन दैट सेंस, yes, it is very much influenced by people who I interact with. A lot of these stories are actually about people that I've met in real life. Okay. किसी से Interesting. वैसे मिले, किसी के साथ दोस्ती थी, Yeah. किसी को जानते थे, किसी की कहानी सुनी, कोई बचपन के किसी को बचपन से किसी को आपने देखा था. एक स्टोरी मैंने की थी अबाउट दिस शॉपकीपर. वो मैं जिस नेबरहुड में ग्रू अप इन द नेबरहुड, वहाँ पे देयर वाज एक्चुअली अ शॉपकीपर. उनकी स्टोरी है. But the one thing is कि they're all stories about somebody. At times लोग समझते हैं कि ये फिक्शन है. टोटल फिक्शन कभी भी नहीं हुई, और मैंने भी कभी होगी भी नहीं. Yes, there is an element of किसी की कहानी, उसके ऊपर yes there is a something
that I sort of incorporate because वो मेरा perception of how I perceive that story वो वहाँ पर आ जाता है. पर ये कहानियाँ हैं, इसके पीछे लोग भी हैं और इनके पीछे मेरी अपनी मुझसे एक दफा किसी ने मैसेज किया, उन्होंने कहा कि please tell me that you have not gone through all of this. So मैंने कहा what if I say that's true? She said oh no, that's but that's what I was saying. It's actually good that I have experienced all of that. Yeah. और at times not just कि वो आप मिलें और आपके साथ वो बहुत tragic सी कुछ story हो जाए, और at times it's just you just meet somebody and you listen to their story. अब वो हुआ उनके साथ होता है, it's just how project it. और the reason of doing it is कि मेरे नज़दीक ये बहुत सी कहानियां हैं जो शायद छुपी रह जाएंगी इस दुनिया में अगर आप इनको नहीं बताएंगे, और इनका बड़ा ज़रूरी है इन कहानियों को ऊपर आना, बिकॉज मुझे जो जो अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम जब इस काम को देखते हैं तो हम कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्ट इसी वजह से करते हैं कि ये कहानियां उन्होंने भी अपने अगर देखी हुई, बस जस्ट कि वो पहली दफ़ा आपको किसी एक फॉर्मेट में किसी एक कैनवस के ऊपर आपको नज़र आ रही हैं, और वो आपको रियलाइज होता है इस बंदे को तो मैं जानता हूँ, ये तो मैंने भी देखा हुआ है, या ये तो मेरे भी किसी दोस्त के साथ हुआ हुआ है, या तो मेरी भी किसी दोस्त के साथ हुआ हुआ है, या तो ये आई वाज इन अ रिलेशनशिप वंस, तो मेरे साथ भी ये हुआ हुआ है. तो दे आर वेरी क्लोज टू यू एंड दैट इज व्हाई पीपल कनेक्ट, और एंड दैट इज व्हाई पीपल फील, मुझे लगता है कि उन्हें वो जो एक आप कह लेंगे, मैं हील वाला तक तो नहीं जाऊंगा कभी, बट एक जो सेंस ऑफ रिलीफ या पीस है वो इसी से आता है कि हम तन्हा नहीं है, और भी लोग हैं इस दुनिया में जिनको ये ऐसे महसूस करते हैं, जो ऐसे दुनिया देखते हैं, जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है. बिकॉज हमारी कहानियां डिफरेंट हैं पर एट द सेम में बहुत कॉमन भी हैं. हम सब के हमारे में किसी ने कहा आप यू आर अ सैड आर्ट इलस्ट्रेटर, आई थॉट के देयर इज दैट अ टर्म सैड इलस्ट्रेटर कोई जॉनरा है, पर इट्स नॉट जस्ट सैडनेस. ये कहानियां हम सबकी हैं, हमारे इर्द लोगों की हैं, और इनमें सिर्फ सैडनेस नहीं है, इनमें बड़ी उम्मीद भी है, इनमें बड़ी खुशी भी है. हाँ, वो एक टिपिकल डेफिनेशन जो आपको शायद मूवीज में लोग दिखाते हैं हैप्पीनेस की, शायद वो नहीं है. और क्योंकि वो इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो मैं टीवी नहीं देखता, और दूसरा ये कि मुझे वो हैप्पीनेस में मेरा हमेशा उससे इतराज है कि वो किसने डिफाइन किया है, वो कौन है बंदा. मैं हैप्पी नहीं हूँ. हाँ, हैप्पी नहीं होगा तो वो कौन इतना बड़ा चैंपियन था जिसने डिफाइन कर दिया पूरी दुनिया के लिए. सो yes, it is. To come back to your original question, it is influence, and I'm very happy that it is, and I think it will always be. And I think that is what art should be. I think आप पढ़ाती हैं, so I'm pretty sure, and I think you sort of build that into your students as well. How to find those stories. हाँ बिल्कुल. I think it's like as an artist, or like even when I say as a designer, you have to live through 1,000 lives. Because it's not always your story, but हमेशा ये होता है कि किसी ना किसी की कहानी को क्योंकि आप अपने नज़रिए से देख रहे होते हैं या आप अपने नज़रिए से बयान कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी कहानी बन जाती है. तो आई थिंक वो जो बात आपने कही थी कि इट्स नॉट एग्जैक्टली हीलिंग, बट आई थिंक हीलिंग भी एक प्रोसेस है कि एट टाइम्स जब आप ये कहानियाँ हम बताते हैं या हम काम करते हैं, या जैसे इन माई स्पेसिफिक केस व्हेन आई मेड माई स्टूडेंट्स डू इट, इट वाज लाइक इन अ लॉट ऑफ वेज वो थेरेप्यूटिक भी था. वो आपको एक पॉइंट पे रिलीविंग भी आपके लिए हो जाता है, एक सेंस ऑफ रिलीफ भी आपको मिलता है जब वो कहानी निकल आती है या जब वो इमोशन एक्सप्रेस हो जाता है. और एट टाइम्स वो ट्रिगरिंग भी हो जाता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं फेस करना चाह रहे होते. लाइक आई थिंक आर्ट इज़ वन सच मीडियम दैट काइंड ऑफ मेक्स यू फेस इट. फिर आप उसको डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप इलस्ट्रेशन के उससे देखें, अक्सर आप फिल्म देखते हैं and there are so many things that you can relate to and you can really like talk about कि अच्छा ठीक है ये scene ऐसा है या इसमें एक ऐसी story line है which you can really think about. or even when you're reading, right, like अक्सर हम किताबें पढ़ते हुए भी कहते हैं कि ये वो वाली बातें हैं जो शायद हम नहीं इस तरीके से कह पाते, but like the author or the poet really says it in that manner. So I think that is probably like one of the most powerful things I find about art. Like I think because as a designer as well, काफी बार practice में ऐसा होता है कि हम like I don't work commercially primarily for that reason, because I feel it's such a personal process. I think कि मैं अक्सर if I want to kind of feel better, I start designing. एंड दिस इज़ वाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें करना या वो काम करना जो एक तरीके से मेरी वैल्यूज़ के साथ अलाइन करता है, या वो काम जिसमें एटलीस्ट मैं कोई ना कोई चीज़ मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ फ्रीली.
without it kind of being directed by कि नहीं इस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से होना चाहिए. So I think it's similar for you, right? Like what you said ke it's not about other people's point of views or other people's stories. It's about how you kind of change them and how you kind of make them your own, because you might not have lived through each personally, but you've lived through them. Like I think it is that Lived through more than the ones that I more would than have. most. Yeah, More than what I absolutely. would have wanted to, but I think आपने you said a couple of things that are very very meaningful. एक तो ये कि I genuinely respect what you said कि इसको not using it for the commercial purpose, and that is Yeah, something that we recently have been grappling with as well. Is कि I'm not using it, but some other people who are sort of taking inspiration and then using it, and it affects me because मेरे लिए ये काम बहुत पर्सनल है, बहुत पर्सनल स्पेस से आया है और बड़ी पर्सनल मेरे लिए उसका प्रोसेस बहुत बहुत पर्सनल है. मतलब एट टाइम्स में it literally it happens कि when I complete a piece and it's somewhere around 2 a.m. or 3 a.m. I even get up and start dancing. Like I finally got it right. मतलब it's yeah, 6 घंटे लगाए हैं एक piece पे, and you put it online, at times you don't, and आपको उस पे कोई अच्छा response भी नहीं आता, हम लोग कहते हैं, but आपको for you that moment there when you started dancing because you got it right exactly how yeah, you wanted it, उसका कोई रद्द बदल नहीं. मतलब आप उससे उससे पैसे भी कमा लेंगे उस पीस से. आप उससे वो आई थिंक दिस इज म्यूजिशियन, उसका एक बड़ा फेमस वो पॉइंट है, उसका एक गाना चोरी हो जाता है तो वो कहता है कि इट्स द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड बिकॉज it would yeah, have been a crime to write this song and make money from it as well. So I think that's also true with the art that I make. It'd be a crime to get what the happiness that I get out of making it, then also yeah, use it to make money. So I think that is very true. And also the process, I think ये मैं बहुत से लोगों को कहता भी हूँ, और I think आप तो I think you've championed that art के process कितना important है, and I think वो आप yeah, पढ़ाती भी उसी तरह ही है कि आर्ट बनाने का ना प्रोसेस लोगों को समझना चाहिए, वो एंजॉय करें. एज लॉन्ग जब तक आप वो नहीं करेंगे, आपका एंड प्रोडक्ट जितना भी वो आप कह लें, आपको हजारों लाइक्स भी मिल जाएंगे, आपको फॉलोअर्स भी मिल जाएंगे, बट डीप डाउन इनसाइड अगर आपको आर्ट से वो चीज नहीं मिल रही ना जो आर्ट का मकसद है, देन मेरे नजदीक क्योर बिल्कुल. नॉट स्टॉप मेकिंग आर्ट, देन डू मल्टीपल अदर थिंग्स दैट कैन गेट यू फॉलोअर्स, लाइक्स, और बहुत से तरीके हैं आप तो करने Yeah, कमाने को, ये फेम कमाने के. I think उसको प्रोसेस में हमेशा हर किसी को कहता हूँ कि इस प्रोसेस को enjoy. The art lies in the process, not in the end product. जो no, फाइनल जो that's चीज़ है yeah, वो तो दीवार पे लगनी है, या वो आपकी किसी इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जानी है, फेसबुक पे, और 10 लोगों ने देखनी है, अगले दिन भूल जाएंगे. इतना कंटेंट लोग देखते हैं, yeah. वैसे ही भूल जाएंगे. तो वो उसका प्रोसेस आप एंजॉय करें. एंड आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ ब्रिंग आउट दैट प्रोसेस, बिकॉज आई नो आप पढ़ाती हैं एज अ टीचर. बस मेरे लिए प्रोसेस बड़ा वो है, ऑर्गेनिक है, जो बस मैंने सीख लिया, मैं कभी स्ट्रक्चर नहीं किया उसको. So I think मेरी इस तरह ये जर्नी शुरू हुई थी when I was a student as well, because I think मैंने जिस तरीके से पढ़ा या जो मैंने इंटरनलाइज किया, वो एक कुकी कटर अप्रोच था कि आपको ब्रीफ मिलती है, आप उसका बारे में थोड़ा सा सोचते हैं और सबसे पहले आप वही काम करते हैं कि आप टूल्स खोलते हैं, राइट? लाइक आप कंप्यूटर खोलते हैं, आप इलस्ट्रेटर पे शुरू हो जाते हैं. And I think like it was post graduation when I found a mentor, and when I was working with him, that I realized कि मैं एंड प्रोडक्ट की तरफ भाग रही थी. आई wasn't even realizing कि मैं क्या करना क्या चाह रही हूँ, या अगर मैं कोई चीज़ बनाना चाह रही हूँ तो उसके पीछे मेरा मकसद क्या है बनाने क्या, या उसके कौन से वेरिएशंस भी हो सकते हैं. बिकॉज आई थिंक एक पिक्चर दिमाग में होती थी कि अच्छा ये इस गोल पर पहुंचना है, पर वो जो एक जर्नी की हम बात करते हैं उसको मैंने कभी इस तरीके से देखा नहीं था, या प्रॉपरली फॉर्मलाइज नहीं किया था. एंड आई थिंक अब जाकर एज अ टीचर इट काइंड ऑफ हिट्स मी, एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस के when my students post lockdown जब classes restart हुई थी and I started giving them work again, और जब हमने पहला असाइनमेंट किया था वो कंप्यूटर बेस्ड असाइनमेंट था. वो यही था कि ठीक है मैंने ब्रीफ दे दी and they came up with work, और काम बहुत अच्छा था. It wasn't that the work was bad, or it wasn't that कि उस काम में डेप्थ नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बट आई थिंक उस काम में वो फील नहीं थी. Like it was technically beautiful, it looked great, but I think the emotions were missing in that, right? It was more like ठीक है assignment आपको मिला है और आपने कर दिया है. And that kind of made me take a step back, because personally जो मैं अपनी practice में अब करने लगी हूँ, and this is what I kind of gave my students as well, कि tools को भूल जाओ, just think about what you want to do first and kind of just experiment. So it's like I think experimenting plays a huge part in that कि बस आप हाथ से काम करके देखो.
Like, if it's wrong, if it's like not clean, it doesn't look nice, that doesn't matter. It's about ki yaar, have fun with it. Just play with colors, play with like different tools, see what works, and play with things that are not even very common. So pen, pencil, paint brush वगैरह तो चलो सबको पता है कि आपने उसके साथ काम करना है. But what other things can you come up with? So my students did it really well, because I think एक assignment था where they had to play with textures. और उन्होंने सारी चीजें मेहंदी से लेकर like things in the kitchen, thread, like they picked all sorts of different tools and they played with that. And I think usme like wo काम simple था, like it wasn't, I wouldn't say कि वो technically it was the brilliant or जो भी वो था, but I think the emotion that work conveyed, वो कोई भी digital काम उस point पे नहीं कर पा रहा था. And I think that kind of helped them understand and helped me understand कि it's not always about the end product, what you were saying कि बस आपको ये final करके ये चीज़ दिखानी है, but it was more about कि आपकी journey क्या है, आपने सोचा क्या है, आप किस तरीके से उसको define करते हैं, आप mentally उसको किस तरीके से visualize कर रहे हैं, and then kind of bringing it on paper. So उसके बाद when we kind of went back to doing it digitally again, that digital work from the first assignment that they did till the final one, it retained a lot of that soul as well. It retained those textures and that feeling and that emotion. So I think ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी learning थी कि it's not always about कि अच्छा आपको assignment check करवाना है, आपको काम करना है. और I think उनके लिए भी एक बहुत वो था in just understanding and really kind of connecting with the roots, so to speak. Because I think हम इतना like it's just become such a, I would say, a mad way of working, in the sense it's like हम तेज में बस हमें तेजी में काम करना है, एक दिन में खत्म करना है, rushed process वो होता है. To really reconnect with it, it's very important. And I think that as a designer, this is what I had to tell myself as well. What I teach, I have to kind of apply that as well. So every time I kind of feel myself slipping back into कि अच्छा ठीक है नहीं rushed process है या बस करके दे देना है, I kind of rethink of this process and like what I taught and like the way things have been, and like just tell myself कि it has to be slow, like it can't be a rushed journey, it can't be the end product. 3 दिन लगते हैं, 6 दिन लगते हैं, that's okay. It's all about like जितना मैं इस process में सीखूंगी, मैं शायद end product में नहीं सीख पाऊंगी. Oh, I think that's you hit the nail on the head. So one of the most common questions I get asked by people is आप software कौन सा use करते हैं? Yeah. मेरा इतना दिल जलता है इस बात पे. मैंने कहता अब तो मैं पुट्ठे सीधे जवाब देने शुरू कर दिया. तो मैंने एक बंदे को मैंने कहा मैं जी वो VLC यूज करता हूँ. VLC कौन सा सॉफ्टवेयर है? Oh, that's amazing. आके गूगल मतलब मैं क्या करूँ, मैं बता थक गया हूँ. और एंड आई लिटरली मैं इस कन्वर्सेशन में पब्लिकली कहता हूँ आई यूज फोटोशॉप व्हिच इज फोटोशॉप 5, जो अब मेरे ख्याल से कोई 10 भी आ गया है. मैंने टैबलेट 8 साल पहले लिया था, और वो भी इस तरह लिया था कि मैंने कॉल सेंटर में पैसे जमा करके तो 15,000 का मैंने टैबलेट लिया था, और आज तक वही है. मतलब 8 साल से वो, और हर टाइम मेरे बैग में होता है. मेरा लैपटॉप is something I bought HP का when like 18,000 का, like कॉलेज से मैं निकला था यूनिवर्सिटी से, मेरे पास कुछ नहीं था. तो मैंने एक दोस्त से कुछ पैसे लिए थे और लैपटॉप लिया था. वो आज ही इतना मोटा लैपटॉप है जिसमें मैं पेंट करता. So and I'm not saying कि equipment is not important, या obviously material equipment is important, पर सबसे पहले वो है मेरे एक there was one person I used to meet right in the beginning जब मैंने पेंट करना शुरू किया था. वो एक आर्टिस्ट थे, रावलपिंडी के अंदर कहीं रहते थे. वो बड़े ट्रेडिशनल आर्टिस्ट थे, लाइक वो सफेद कुर्ता वाले आर्टिस्ट थे. और मैं आज तक उनकी बातें इतनी एंजॉय करता हूँ. उन्होंने मेरा काम पहली दफा देखा था और उन्होंने कहा तुम गलत वक्त में पैदा हो गया, तुम्हें 100 साल पहले पैदा होना चाहिए था, तुम लेट पैदा हो. उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात की थी, मैं हमेशा याद रखता हूँ. उन्होंने कहा था उन्वान सबसे पहले आता है, टाइटल कम्स फर्स्ट, सबसे पहले, बिफोर यू स्टार्ट पेंटिंग. और उसका कहते हैं इसका मतलब ये है कि फिगर आउट द व्हाई बिफोर यू फिगर आउट द हाउ एंड द व्हाट. क्यों बना रहे हो, क्यों बात, क्यों. अगर आर्ट एक फॉर्म ऑफ गुफ्तगू है, और आर्ट वाकई में एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, तो एक फॉर्म ऑफ गुफ्तगू है ना, एक कन्वर्सेशन है. कैनवस से है, कैनवस के थ्रू, बट बाकी लोगों से है, लाइक होगी गुफ्तगू. तो गुफ्तगू करने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए ना आप क्या कहना चाह रहे हैं. मतलब व्हाई यू वांट टू से समथिंग, क्यों बात करना चाहते हैं. वरना अदरवाइज तो सॉरी टू यूज द वर्ड, अदरवाइज इट्स जिब्रिश. मतलब आप बात कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता क्यों बात कर रहे हैं. सो यू फिगर दैट आउट पहले कि क्यों, व्हाई आर्ट क्यों बनाना चाहते हैं आप. अदरवाइज बात वही है कि एक्सप्रेशन अगर एक्सप्रेस करना है तो लाइक बहुत मीडियम्स हैं. सब तो डिजिटल मीडियम्स इतने हैं, ट्रेडिशनल मीडियम्स इतने हैं, या
अगर सिर्फ आपको रिकग्निशन चाहिए या आपको कुछ लाइक्स चाहिए तो कुछ फॉरम्स पे, तो वो उसके भी मल्टीपल तरीके हैं, लोग तो पता नहीं क्या क्या करके कर रहे हैं। तो फिगर आउट द व्हाई फर्स्ट, सबसे पहले कि क्यों बनाना चाहते हैं, एंड देन आई थिंक वंस यू डू दैट, फिर आपको प्रोसेस खुद ही इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाता है। Yeah. मगर आपको पता होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्या है, एंड गोल आपका इज समथिंग जो आप कहते हैं हाँ जो बनेगा, जब इवेंचुअली बनेगा वो लोगों के लिए बनेगा, वो मतलब ऑडियंस के लिए बनेगा, मेरे लिए तो ये प्रोसेस है ना, तो फिर आप प्रोसेस अपने लिए एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हर किसी को, आई थिंक अब हर किसी के पास आप जैसी टीचर तो नहीं हो सकती, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पीपल टू नो के टूल्स सॉफ्टवेयर्स ये सेकेंडरी कन्वर्सेशन है। सबसे पहले कन्वर्सेशन ये है कि क्या क्यों बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद फिगर आउट करेंगे आप कैसे कहना है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कराची, 1 ईयर आई लिव्ड इन कराची, तो मेरा एक स्टूडियो था यूसुफ बशीर आर्टिस्ट कम्यून पे, यूसुफ बशीर के पास। तो एक दिन मेरे पास उस टाइम पे जॉब भी कुछ छोटी सी होती थी, तो पैसे भी नहीं होते थे पेंट्स लेने के लिए, तो एक दिन आई वाज आउट ऑफ मटेरियल, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो उनके वहाँ पे कोई पुराने बॉक्सेस आए हुए थे, कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था। आई लिटरली स्टार्टेड पेंटिंग ऑन दैट। मैंने वो कार्डबोर्ड के टुकड़े किए और मैंने वहाँ पे पीछे वो वुड कार्वर्स बैठते थे, तो उनके पास कुछ चारकोल पड़ा होता था जिसको निशान लगा था। आई पिक दैट अप एंड आई स्टार्टेड पेंटिंग, और मुझे याद है कि मैंने कुछ 15 पोर्ट्रेट्स एक दिन में बनाए थे, लाइक रैंडमली, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू ड्रॉ, और मुझे उस टाइम मीडियम कुछ नहीं मिल रहा था, मुझे यही ठीक है। सो एंड देन इन माय रूम अर्ली व्हेन आई रियली स्टार्टेड ऑफ, तो वो तब भी ये था, वो दीवारें भी भरी होती थी, तो बाहर की दीवारें भी, तो मेरा बस ये कहते थे कि क्या तुमने पूरा घर क्या बना दिया। So I think that is the kind of, that is what I'm trying to say is कि even at times I forget, I think it happens with you as well, कि कभी कभार आप भूल जाते हैं कि प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप कोलैबोरेशन कर रहे हो या किसी के साथ काम कर रहे हो, पर अपने आप को ये रिमाइंड कराते रहें कि क्यों आर्ट बना रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बिकॉज मतलब अगर देखें, अगर आप आर्ट को भी, मैं इसको कैपिटलिस्ट सोच समझता हूँ कि एंड प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी में कि आप कितना ज़्यादा बना रहे हैं, ये कैपिटलिस्ट मेंटालिटी है, हम उसमें फंस गए हैं कि वो चर्न आउट करें, प्रिंट्स निकाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रोजाना पोस्ट निकाल रहे हैं, लाइक वो चर्न आउट कर रहे हैं, तो हम भी उसके कुछ शिकार हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर कैपिटलिस्ट सोच को अगर आप आर्ट के अंदर भी ले आएंगे, तो फिर यू आर लेटिंग कैपिटलिज्म विन, बिकॉज आर्ट एंड दीज फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस आर वेरी फ्यू रिमेनिंग, जो आई थिंक जो ग्लिमर ऑफ होप है, जो एक रिबेलियन है अगेंस्ट द मेन स्ट्रीम स्कूल ऑफ थॉट्स। और आर्ट का काम ही है कि वो इनको चैलेंज तो करे, एटलीस्ट सपोज नहीं तो चैलेंज करे, कुछ नोशंस अदरवाइज बिल्ड नहीं होते माशरे में, वो वन साइडेड नोशन बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। सो इसलिए मैं मतलब एट टाइम्स आई टेल पीपल के ओरिजिनल जो भी करें, ओरिजिनल करें, अपना काम करें, मतलब कभी भी इंस्पिरेशन जरूर लें, वेरी इंपॉर्टेंट, पर अपना करें, जो आपका है वो आपको पता होना चाहिए, मेरा है, मेरे दिल से निकला हुआ है। अदरवाइज फिर आप यू आर लेटिंग दैट थॉट विन, आप कर तो लेंगे, बना भी लेंगे, पर आपको वो सेटिस्फैक्शन जो आर्ट से आनी चाहिए वो कभी भी नहीं आएगी, और फिर आप अपने साथ, मैंने जिक्र, आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप आर्ट जैसी चीज को भी यूज नहीं कर रहे उस पर्पस के लिए जो जो सबसे प्योर चीज है, मेरे जिक्र स्टिल वन ऑफ वेरी फ्यू थिंग्स दैट आर प्योर इन दिस वर्ल्ड। म्यूजिक भी सब वो हो गया है अब तो, लाइक पेट्रन म्यूजिक है आपका, सारा ब्रांड्स आ गए हैं, आई थिंक क्लोथिंग टेक्सटाइल भी सारा, फैशन भी बहुत ज़्यादा हाईली कैपिटलाइज्ड हो गया। So I think, and I'm really happy that you also sort of work on the same lines. वो process is very important, और आप उसको कैसे लेके चलते हैं। But at the same time, I think जब process पे भी जब आप, I would love to know more from you, इसके how does the process help you? मतलब एक तो अपनी ये बात की process important है, but how does it help you? For example, to let's say अभी की situation अगर हम ले लेते हैं, ये chaos है, in an unprecedented environment जिस हमने शुरू की थी बात, तो how does it help you? For example, अगर आप process पे focus करें, is it possible that this process can help you or make better sense of what is happening around us? आई थिंक सो। आई थिंक इससे एक तो मुझे ये चीज़ याद आती है कि अगर हम एक बच्चे की बात करें, और जो आपने बात कही कि जो भी चीज़ आपको नज़र आए, लाइक मटेरियल शुडंट स्टॉप यू फ्रॉम क्रिएटिंग, और अगर आप एक बच्चे को देखते हैं तो उसको दीवारें घर की नज़र आती हैं, कोई भी चीज़ नज़र आती है वो बनाता है, राइट? लाइक उस इट डजंट स्टॉप दैट किड फ्रॉम एक्सप्लोरिंग। और आई थिंक एक इसी तरीके का मेरा भी वो है, लाइक दोनों एज अ टीचर एंड एज लाइक अ डिज़ाइनर स्लैश आर्टिस्ट माई सेल्फ, कि आई थिंक एक तरीका मिल जाता है एक्सप्रेस करने का।
बिकॉज आप इतना देख रहे होते हैं, आप इतनी चीज़ें सुन रहे होते हैं, इतना सब कुछ हो गया. एंड आई थिंक एक डिजिटल एज में, सोशल मीडिया की एज में स्पेशली, every second there are like 50 new posts. Good things, bad things, people creating things. So I think उसमें एक तरीके से, एक तो वो इतना, क्योंकि वो नॉइज हो जाता है जमा, जो आप कॉन्स्टेंटली आप सोक इन कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं. तो जब आप खुद बनाते हैं, या आई थिंक जो मैंने जिस तरीके से अपने करिकुलम को भी recreate किया एक तरीके से, I think it was just a way to understand and make sense of things. I think by expressing what we are seeing or what we are going through, it just kind of helps you take off that load. कि जिस भी तरीके से in a way, like I think आपके जब दिमाग में एक चीज होती है तो आप वो आपके लिए बहुत बड़ी आपको लग रही होती है. And I think when you kind of put it on paper and when you like let it out of your system, तो आपके लिए आसान हो जाता है थोड़ा सा उसका सेंस बनाने में, कि जब आप वो जो भी आप इमोशंस, थॉट्स, जो एक जंबल आप वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जब वो एक दफा आपके सामने आ जाता है तो उसको समझना और आसान हो जाता है. तो आई थिंक लाइक जब अगर हम हीलिंग की भी बात करें या अगर हम थेरेपी की बात करें, तो आई फील आर्ट वर्क्स इन दैट मैनर कि व्हेन यू रियली लाइक लेट योरसेल्फ go free and you kind of like put whatever you're thinking on paper, using whatever you have at hand. Like it doesn't have to be कि आप digital उसमें करें या आप hand उससे craft से करें, like whatever you can find, if you just put it out on paper, I think it can be very relieving, or like it can at least like just kind of make you understand whatever is happening. Yeah, no, that's true. I think. By the way, ये tang है, please. अगर कोई Okay. तो मेरे बड़े साहब I was thinking about. I swear to God, ये tang है. So चीनी भी है नहीं चाहते. If you say so. No, it is a Sara, for the love of God. Okay. Not public forum. तो मैं सुबह से काम कर रहा हूँ सारा, मतलब शुगर Okay. so no, I agree. So I think in that sense, I think art still has that ability to help you and to help you understand what is happening. Yeah. But at the same time, आपने एक बात बड़ी अच्छी की कि हम एक मिनट में, और दैट्स एक्चुअली ट्रू नाउ, आप एक मिनट में 50, अगर आप इंस्टाग्राम पे भी हैं तो आपको 50 एटलीस्ट, अगर आपने 100-200 भी अकाउंट्स लाइक किया तो 50 नहीं पोस्ट आपको हर दफा आप रिफ्रेश करेंगे. और उसमें अगर आपने आर्ट अकाउंट्स लाइक किया तो इतना दुनिया में आर्टिस्ट है कि आपको, मतलब आपको कभी कभार ये लगता है कि यार मैं तो आई फॉल नोवेयर इन दिस, मतलब look and the kind of the level of illustrations that some of these people do, आप really it's mind boggling at times. Like आपको लगता है यार ये तो हमसे बहुत आगे हैं some of these people and we'll never reach them, and that's at times so that is, in that regard, I think it becomes even more important कि आप आर्ट को, उसको एक वो जर्नी को कंसिडर करें, नॉट द एंड प्रोडक्ट. व्हाई? बिकॉज अदरवाइज अगर आप जर्नी को करेंगे तो जर्नी का कोई कंपैरिजन नहीं है. आपका इस प्रोसेस का किसी और के, आपका प्रोसेस हमेशा सेपरेट होगा किसी और के प्रोसेस से. ये तो गिवन है. दिस यू कैन नेवर हैव द सेम प्रोसेस एज एनीबॉडी. यू कैन हैव द सेम एंड प्रोडक्ट. वो अगर आप किसी से इंस्पायर हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं और आप उसको बिल्कुल उसको डॉट कॉपी करना शुरू कर दिया, तो आपका एंड प्रोडक्ट करते 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 उस लेवल पर आपका प्रोसेस हमेशा सिमिलर डिफरेंट होता है, बिकॉज वो आप ह्यूमंस आर इनहेरेंटली वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, built differently. In that regard, I think the process, once again, we keep coming back to that because it is very important to keep highlighting that if you want art to help you, then you need to focus on the right things of art, and you really need to make sure that you are actually making art. If it makes sense कि आप सही तरह से आर्ट बना रहे हैं तो वो तभी आपकी मदद कर सकते हैं मेरे नज़दीक. अगर आप नहीं बना रहे तो आप अपने साथ भी जुल्म करें, और आप उस बंदे के साथ, आप एक, मेरे नज़दीक आप ऑडियंस के साथ भी जुल्म करें, बिकॉज ऑडियंस को फिर आप ऐसा आर्ट देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली आप भी उसको पोस्ट करें, वैसा आर्ट देखने को मिल रहा है जो शायद इट्स नॉट ऑनेस्ट. एंड why are you sort of bringing that out to other people in a world that already has a lot of unfortunately हम mass media पे देखें तो क्या हो रहा है, मतलब it's not very pure, it's all comes with an agenda, or comes with an angle. So I think in that sense, to say that how much art helps you, so say that how much art helps you, so one thing that I always, I think, believe in very whole honesty is that art does have the ability to help you. It's just that it needs to come from a very
place of purity. It needs to come from somebody who's very very closely attached to it and very in the, और वो प्रोसेस ना एंड प्रोडक्ट में नजर आता है. ये मैं हमेशा आपको गारंटी दे कि जो उसका प्रोसेस ऑनेस्ट होगा उसका एंड प्रोडक्ट भी ऑनेस्ट होगा. मतलब मेरा काम शुरू में वाज आई स्टिल बिलीव टेक्निकली इट्स वेरी वीक बिकॉज सेल्फ टॉट हूँ तो टेक्निकली शायद कभी भी उस लेवल पे नहीं जा सकता जिस लेवल पे आपका एक सीखा हुआ बंदा जा सकता है. पर उसमें वो एक मुझे पहले दिन से लोग कहते थे कि इट इज आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने फर्स्ट सेट ऑफ पेंटिंग्स बनाई लाइक 30 कैनवसेस भी नहीं, वो कैनवस पेपर होता था. वेरी फर्स्ट टाइम आई शोड इट टू अ फ्रेंड ऑफ माइन जो बिल्कुल कोरा था, उसे आर्ट का कुछ जमीन आसमान का नहीं पता था. मतलब वो मेरा वो दोस्त था, हम सारे दिन बाइक पे फिरते रहते थे और उसे कोई आर्ट का. उसने जब पहली दफा देखा तो इवन उसने कहा आई हैव सीन अ लॉट ऑफ आर्ट लेकिन ये मुख्तलिफ है. और इसकी वजह सिर्फ यही थी कि वो तब भी बहुत उसमें ऑनेस्टी थी और वो आज भी उसमें वो एक सच्चाई का एलिमेंट है बहुत ज्यादा. बिकॉज जब मैं पेंट करता हूँ तो मैं एक बहुत वल्नरेबल स्टेट में जाके पेंट करता हूँ. इस वाई मैं आई डोंट पेंट इन फ्रंट ऑफ लाइक व्हेन आई एम विद पीपल. आई यूजुअली पेंट वेरी मच इन आइसोलेशन. और यही वजह है कि मुझे अक्सर लोग जो मुझे नौकरी में मेरे साथ हैं या दोस्त होते थे या हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है. Because they can't comprehend anybody who's at work is in a certain way can go back and paint something like this. And I always tell them, yeah, it's because when I paint, I go into a certain state in which I paint. So I think that is very important for people to understand. Okay, art has the ability to heal, but for that to happen, it needs the artist needs to be honest and needs to come from that place, and also the audience need to connect with it at that level. And वो connection पहले artist वो बिल्ड करेगा कनेक्शन तो वो ऑडियंस के साथ बिल्ड कर सकेगी, मैं इन माय ओपिनियन एटलीस्ट. हाँ, because I feel art is an expression, right? It's how you are seeing the world. आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप कौन सी कहानियां सुन रहे हैं या सुनाना चाहते हैं. तो आई थिंक उसमें क्रेडेंशियल्स की तो ऐसा बात नहीं है, बिकॉज आई थिंक अक्सर इसी बात पे भी लोग वो कहते हैं कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो शायद कोई अलग मखलूक होते हैं या उनके पास कोई अलग स्किल सेट होता है या उनके पास कोई अलग मतलब क्रेडेंशियल्स होते हैं या कोई क्वालिफिकेशंस होती हैं. एंड आई डोंट थिंक दैट्स द केस. लाइक आई थिंक अगर मैं खुद को ले लूँ, इवन बीइंग अ टीचर और इवन टीचिंग और बीइंग अ डिजाइनर, लाइक I think it has nothing to do with me being an artist, because I feel everyone has that capability. And it's like जो अब्दाल ने भी बात कही थी कि अब्दाल ने जहाँ से शुरू किया versus अब वो जहाँ पर वो हैं, a lot of people get scared at that as well, कि जब आप दूसरों का काम देखते हैं तो आपको लगता है कि इसने ये कर लिया, मैं तो कभी यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, या मैं तो ये काम कभी इस तरीके से कर नहीं सकता. But I think it's very interesting what you said कि आपको भी यही लगता है. Like even being a pretty well-renowned illustrator, you still feel that there are so many other people who are better than you, or like other standards or other levels that you have to reach and achieve to be a better artist or a better illustrator. So I think वो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं पे होता है कि this feeling कि हम like we're not enough, कि हमें शायद कोई ना कोई additional चीज़ों की ज़रूरत है. And I think copying का concept ही वहीं से ही आता है, because हम कोशिश करने से इतना डरते हैं कि हम कहीं उससे फेल ना कर जाएं, तो बेहतर है कि हम किसी का कॉपी करें, बिकॉज लोगों को उसका काम तो या लोगों को उसका काम तो पसंद आ गया, तो मैं भी यही करूंगा या करूंगी तो मेरा भी काम पसंद आएगा. बट आई थिंक क्योंकि सबकी जर्नी अलग है, कि आपने जब कॉपी भी किया, आपका एंड प्रोडक्ट तो शायद सिमिलर हो जिससे आपने कॉपी किया है, बट योर जर्नी वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, बिकॉज आपका पूरा फोकस होगा कि इसने जैसी लाइन टेढ़ी बनाई है मैं भी वैसी लाइन टेढ़ी बनाऊं. और आर्टिस्ट का प्रोसेस राइट, आर्टिस्ट का प्रोसेस बहुत अलग होगा. सही बनानी, वो जान के नहीं बना रहा, उससे लाइन सीधी बनानी आती है. मतलब एक मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, आई डोंट ड्रॉ फेसेस, ठीक है. Partly when I started, it was actually a technique because I was very afraid to draw faces. It's really true, and still that fear is there कि यार मुझे चेहरे नहीं बनाने आते और मुझसे नहीं figure out होता. और शुरू में था, अब मतलब now it's a deliberate thing, and a lot of people who are sort of inspired, they don't draw faces, and मैं बड़ा देख के हंसता हूँ कि यार they don't even know why I didn't used to draw faces. Yeah. It was because आपने मेरा वो पैरानोया भी कॉपी कर लिया जो आपको नहीं करना चाहिए था. मतलब आप क्या पता बहुत अजीम आर्टिस्ट हो और आपके पोर्ट्रेट्स बहुत अच्छे हो, आपने ट्राई नहीं किया कभी देखे को, हाँ ये बंदा नहीं करता तो मैं भी नहीं करूंगा. मतलब डोंट रॉब योरसेल्फ ऑफ दैट. आई फील रियली सैड. रिसेंटली समथिंग हैपेंड एज वेल कि वो
and somebody said कि जी आप you've raised this, I raised this because not for myself, I've raised this because I genuinely want people to get out of this what I got out of this, which is a sense of hope, a renewed hope, Yeah. the sense of कि यार I can be somebody, and this is and becomes your greatest friend. Let me tell you, art can be your greatest friend in the world. You won't need any friend in the world the day you make friends with art. इससे खूबसूरत चीज नहीं है दुनिया में. अगर आप Yeah. इसके साथ दोस्त बन जाएं, आपकी बात भी सुनेगा, ये आपसे बात करेगा भी, ये आपको इज्जत भी दिलवाएगा, ये दूसरे लोगों से भी आपकी दोस्ती करवाएगा. मतलब इससे खूबसूरत क्या चीज हो सकती है, इससे खूबसूरत क्या दोस्त हो सकता है. बट don't rob yourself of that. Yeah. You'll get your share of recognition, you'll get your share of success, you'll get your share of happiness, no matter whatever your journey is. So don't rob yourself of that journey. खुदा ने अगर आपके हिस्से की वो लिखी हुई है ना इज्जत, तो वो कोई भी नहीं ले सकता आपसे. वो सिर्फ ये वो बाद में आएगी, अपने टाइम से आएगी. वो टाइम बिल्कुल. उसको पूरा करने दें. आप जल्दबाजी में किसी का काम देखकर उसको करके, and that is what going coming back to this concept of art as healing, I think that is where it starts from. It has Yeah. to be true. If it's not true, it will not help anybody. And if Yeah. it is true, no matter how weak, no matter how you people say it's poorly composed or how boring the idea is, it will still help people. I assure you that, because I have gone through that. मतलब my pieces in the beginning were so poorly composed, पर फिर तब भी लोग कहते थे कि they find meaning in it. And even if they don't find meaning in it, आपकी शख्सियत में वो चीज़ incorporate हो जाती है. They find Yeah. meaning in you. When they'll meet you, they say they find that sense of calm in you, and then you yourself become like a piece of art, and that is Yeah. still good enough. Instead कि आप बस एक कुछ likes के पीछे भाग रहे हैं, तो going back to is like focus on the process and be honest, बिल्कुल. as honest as you can be. हाँ, बिकॉज आई थिंक द हीलिंग कम्स फ्रॉम द प्रोसेस. कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या आप उस जर्नी से गुजर रहे होते हैं, तो ही वो जर्नी एक तरीके से आपको हील भी कर सकती है. बिकॉज अदरवाइज अगर आपका पूरा फोकस एक्सटर्नल फेसिंग है कि आप सिर्फ इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं कि लाइक्स कितने आएंगे, शेयर्स कितने आएंगे, या वो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, दैट्स एडिंग लॉट मोर एंजाइटी एंड स्ट्रेस. Yeah. मतलब तो आप अगर एक आर्ट को एक हीलिंग पर्पस से देख रहे हैं, देन इट डजंट हैव टू बी लाइक, देन इट हैज टू बी वेरी ट्रू एंड वेरी ऑनेस्ट. इट कांट बी कि अच्छा ओके मैं ये बनाऊंगा या बनाऊंगी तो बहुत सारे लोगों को वो चीज़ पसंद आएगी. तो Exactly. वो तो और आपकी जिंदगी में एक एडिशनल मसाइल, मतलब मसले पैदा होंगे कि अच्छा ठीक है इस चीज के बारे में भी टेंशन लेनी है, जैसे बाकी टेंशन बहुत कम है कि फिर आप एक एडिशनल टेंशन ले लेते हैं. Exactly. You're creating more chaos instead हाँ, of. exactly. So I think it really is about कि आप उस प्रोसेस को देखें, आप उस प्रोसेस को एक्सप्लोर करें, एंड देन I think just start. It's not about कि वो perfect moment आएगा या वो एक perfect दिन आएगा या आपको उसके लिए specific material खरीदना पड़ेगा. It just has to be whatever you have, right? Like वही बात है कि जब आप लिखना भी शुरू करते हैं, आपको एक कागज और एक पेन चाहिए होता है. आर्ट का भी यही है, वही कागज, वही पेन, वही पेंसिल आपकी जर्नी शुरू कर सकती है. It really is about कि जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो आप महसूस कर रहे हैं, आप उसको कागज पे कैसे एक्सप्लोर करते हैं. Abdal, we have about 2 minutes. कुछ आप कहना चाहेंगे before we wrap up the conversation? No, I think not particularly. I would just say that I think once again reiterate the fact that I think we live in times that are very uncertain. Unfortunately, we don't know where we're gonna go from there. We don't know what the new normal will be. हमें नहीं पता कि कहाँ पर माशरा किस तरह डेवलप करेगा. हमारा दुनिया का ग्लोबल इशू है. इन दैट टाइम्स द ओनली थिंग दैट जो आप कर सकते हैं ना, द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, एट टाइम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि हम कोई कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे सोसाइटी में. आई थिंक द ओनली कंट्रीब्यूशन यू कैन डू इज स्टार्ट कनेक्टिंग विद योरसेल्फ, स्टार्ट ट्राइंग टू फाइंड आप कौन है और आप की the value that you already bring, and everybody brings value in this world, इसमें कोई शक नहीं है. बिल्कुल. And then try to sort of connect with people on that level. मेरा एक concept है जिसको मैं once again before going I will try to say just say कि concept of openness. हमेशा be open about how you feel, about your vulnerabilities, about your insecurities, because आपको नहीं पता कि आपके ये बात करने से
किसी की मदद ऑटोमेटिकली हो रही होगी। ऑल्दो बड़ा मुश्किल होता है अपनी वल्नरेबिलिटी के बारे में बात करना, पर इन अ वर्ल्ड दैट इज ऑलरेडी पैरानॉइड, दिस इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन यू कैन मेक। सच्चाई से बात करें। 10 seconds you have, Sara. नहीं, जस्ट टू ऐड टू दैट कि अक्सर हमें बोला जाता है कि हम ये सारी जो अपनी वल्नरेबिलिटी है उसको छुपाया जाए, कि हम नहीं वो करें, और क्योंकि फिर हम सब छुपाने जाते हैं तो हमें कभी पता भी नहीं चलता कि दूसरा भी यही चीज फील कर रहा है. सो व्हेन यू बिकम ब्रेव इनफ टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड काइंड ऑफ like explore your emotions and put them out in the open, वही जो बात आपने कही उससे बहुत सारे और लोगों की भी मदद हो जाती है, और उनको भी यही चीज वो यही मैसेज मिलता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है. आप जितना ज्यादा ओपन होंगे, जितना ज्यादा वल्नरेबल होंगे, जितना ज्यादा अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगे, उतना आप दूसरों की मदद करें, और ये भी बहुत है. True, yeah. And try to build that in your art. Yeah. Or whatever you create. मैं आर्ट की हम बात जब कहते हैं, आर्ट की बड़ी फॉर्म्स हैं, उसको सिर्फ पेंटिंग और इलस्ट्रेशन तक नहीं जोड़ना चाहिए. आर्ट की मेजॉरिटी बहुत फॉर्म्स हैं. जो फाइंड योर ओन कॉलिंग, म्यूजिक है, थिएटर है, एक्टिंग है, लाइक लोगों से बात करना भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट है आज के ज़माने में. 90% people don't even know that. So just find your calling and just keep doing that. And thank you so much. Thank you, Abdal, and thank you everyone. Rahnumai does these great talks. कल भी उनकी एक talk है art और spirituality पे SN Bari के साथ. So we hope that you guys will be there tomorrow as well. Thank you and Allah Hafiz. कह रही हैं सारा आप रहनुमाई के. Yes, absolutely. मैं endorse नहीं करता brand. Okay, fine. Allah Hafiz. Bye. Bye.